So if one of the objectives, let's agree on this. If we found the truth, we have to accept the truth and follow the truth, right? Yeah. So if the truth was with Islam, you and me, we have to accept Islam and to follow Islam. Correct? You agree? So these are the main things. So now, if we have a discussion, and if you find Islam makes sense to you, you will be Muslim. Yeah, correct. All right? Yeah, correct. Fine? You agree with this? I agree. 100%. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलमा शहादत पढ़ने के खूबसूरत मनाजिर देखने से पहले आपको बताते चलो कि मुसलमान आलिमी दीन ने इस गैर मुस्लिम के सामने ईसाईयत के हवाले से तमाम हकाइक रख दिए। इस तरह इस्लाम के मुतालिक बुनियादी मालूमात भी फराहम किए गए। पूरे बहस के दौरान इस नौजवान ईसाई का राय लेता रहा कि सच्चाई और हकीकत किस दीन में नजर आ रहा है, तो बस इस नौजवान की तरफ से एक ही जवाब मिलता रहा, वो था इस्लाम, इस्लाम और इस्लाम। आखिर में ये नौजवान हकीकत तक पहुंचते ही जज्बाती हो गया और इस्लाम की तरफ माइल होता गया। ये मनाजिर इंतहाई ईमान अफरोज है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, लेकिन इससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। So, going back to the promise that we have said in the beginning, if the truth comes to you and if it makes sense to you, you will accept it. Correct? Correct? Those are your words. Yeah? Now, do you want to accept Islam according to your promise and according to your words? So, I mean, because like since I was young, I've been brought up into like my upbringing has all been Christianity and that. So I have to accept it. But the truth is the truth, correct? Yeah? Now, do you want to accept Islam? Yeah. Okay, good. To become a Muslim is to say the words of testimony. To say, I testify, none worthy of worship except Allah. Allah in Arabic means the one God. And to testify that Muhammad is the messenger of Allah. And to testify that Jesus, peace be upon him, that he is a messenger of Allah. As simple as that. You want to do that? Okay. So repeat after me. Yeah. We'll say it in English and then we'll say it in Arabic. All right? Okay, Moses? Yeah? Yeah. I testify I testify that that there is there is none worthy of worship, none worthy of worship worthy of worship except except Allah, Allah, and I testify and I testify that Muhammad that Muhammad is the messenger is the messenger of Allah, of Allah, and I testify and I testify that Jesus that Jesus is the messenger is the messenger of Allah. of Allah. We'll say it in Arabic. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله وأشهد وأشهد أن أن عيسى عيسى رسول رسول الله. الله. That's it. माशा अल्लाह, जो भी गैर मुस्लिम अगर सच्चे दिल से सच्चाई जानने की कोशिश करें तो वो जरूर हिदायत पाता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। इसी मकसद के खातिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी गैर मुस्लिम को ईमान नसीब हो जाए। मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।